Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing great. Well, today's topic is contouring, blush and highlight. I know contouring is not everybody's cup of tea, but let me tell you, if it's done correctly, it'll just change your look. But at the same time, if it's not done properly, it will create a disaster. So here I am to teach you some easy ways to contour your face, to apply blush and highlight in a correct manner. Before starting the video, please do subscribe to my channel and hit the bell icon to get notified every time I post new videos. Well, let's get started. Before starting, I wanted to show you guys the before and after effects of contouring. Guys, we are going to cover the topic one by one. So the first topic is contouring. What is contouring? Contouring is a technique to sculpt your face by creating shadows. So हमारे face पे natural shadows होते हैं. Gets hidden after foundation application. So जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैंने अपना foundation apply किया है. So the shadows are missing. My face looks kind of flat. So to bring back the shadows, we contour our face, and it is actually essential to bring back the shadows. Otherwise, our makeup looks kind of made up. So yes, अगर आप लोगों ने shadows create नहीं किया, the makeup kind of looks flat और वो काफ़ी unnatural सा दिखता है. So yes, it is necessary to contour your face. And where do we generally contour? We contour our forehead, we contour our cheekbones, we contour our jawline and nose as well. So today I'll be showing you some easy ways to contour your face. There are different types of face shape, but the ideal face shape is oval. Will not blend this side of the face, but will blend this side of the face so that I can show you the difference after the completion. ठीक है, तो दोनों का difference आप लोग खुद देख सकते हो. I'm using a cream contour. तो आप लोग cream contour का भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग powder contour यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले हम अपना forehead करेंगे. Also let me tell you, if you contour your forehead, आपका जो foundation का है, it looks kind of natural. सबसे पहले I'll just apply in the form of dots. मैं दोनों side apply करूँगी, ठीक है? But I'm going to just blend on one side. Now the blending part. So you can either use your brush, you can either use your sponge, but for now I'll just use my fingers. So let me tell you how to blend. तो जब भी ऐसा forehead का blending होता है, you need to take the blending upwards and don't drag it, just blend it like so, ठीक है? और जब blend करोगे आप, तो try to take it upwards. तो आप देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ पे एक शैडो सा फॉर्म हो गया है. एंड फाउंडेशन के साथ उसको ब्लेंड करने के लिए मैं अपना स्पंज यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो ब्लेंडिंग है वो काफ़ी स्मूथ लगे. सी, अगर आपको लग रहा है कि आपको और थोड़ा ज़रूरत है, एंड ऑलवेज गाइज स्टार्ट विथ लिटिल अमाउंट एंड देन स्लोली इफ़ यू नीड इट यू कैन रीअप्लाई इट. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और यूज़ करूँगी. Well guys, I'm done with blending this side of my face. This side I'm going to keep it as it is. Now we are going to move to our cheekbones, which is the most important, and I feel like most of them are scared of doing the cheekbones, क्योंकि अगर by chance आपका contour थोड़ा सा नीचे हो जाता है, it makes your face droopy. Correct way to contour your cheekbones, let me tell you. First of all, you have to find the hollows of your cheekbones. ठीक है, suppose you can't find it, what you need to do is you have to make this kind of fish face. Okay, now you can feel the hollows of your cheekbones. You have to place your finger here and you have to take your contour stick. ठीक है, अब हमको hollows के ऊपर वाला जो एरिया है, जो चीक बोन है, वहाँ पे हम लोग को एक लाइन खींचना है इस तरह. It should be in an angle है. So same, okay, हम लोग ये भी अब एंगल कैसे बनाएंगे. ओके, सो दिस इज़ दी स्टार्टिंग ऑफ योर ईयर एंड इस तरह का एंगल होना चाहिए. डोंट ब्रिंग द कॉन्टोर वेरी क्लोज टू योर माउथ. ठीक है, इट शुड बी राइट टिल द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आइज. ठीक है, blending thing, you just have to
press it like this. Don't bring it down. Instead you can just push it towards your ears. लेकिन push से ज़्यादा try to blend it like this, tap tap motion में. That's it guys, this is what it should look like. And ये जो edge है that you can actually blend it with your sponge like so. So आप देख रहे हो how nice and how smoothly this got blended. Okay, well, let's move to our nose. For the nose you have to try to create a straight line. If you can't, what you can do is you can just put the cream contour on your finger, and with your finger you have to just create a straight line like so. Okay, same. Creating line is so simple, right? So we are again going to blend this side. So contouring is generally done with cool tone brown shades, that is 2 shades darker to your skin tone. Okay, this is how I blended my nose ka contour, and now we are going to move to the jawline. जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये double chin, so this kind of gets vanished once we contour the jawline. To create the contour under this, I'm going to take this stick and यहाँ से लेके so अभी हम लोग को blend कैसे करना है. It's like you have to take the product down. ठीक है. So blending is something you have to take care of. Blending, the more you blend it properly, the more it is going to look natural. तो हम लोगों ने यहाँ पे तो shadow बना लिया है. So this side you can see the line, right? So now can you see like this part looks so snatched, and यहाँ का जो double chin है वो भी गायब हो गया. But at the same time this side. Well guys, the next topic is highlight. Okay, so what does highlight do? It enhances the feature. जो आप लोगों ने shadows create किए, it kinds of hide it, but highlight क्या करता है, आपका जो feature है, जब light hits your face, it enhances that feature. Okay, it kinds of glows. So if you have textures on your face, it is recommended to avoid highlighters, because highlighter आपके वो जो pores को, वो texture को और enhance कर देगा. So if your skin is smooth, if it's okay, especially on the high points of your face, then yes, please go ahead and apply highlighters. So फिलहाल highlighters हम लोग कहाँ apply करते हैं, let me tell you. So the main place where we apply the highlighters is यहाँ पे होता है the highest point of your face. Okay, तो अगर आप लोग अपने फिंगर से आप यहाँ पे टच करोगे, आप एक बोन फील कर पाओगे. So there, that's the point where we generally highlight. So don't bring the highlighter too close to your nose. Okay, यहाँ पे होना चाहिए, so that your face looks lifted. So जितना आप ये angle बना के रखोगे, आपका face उतना ही काफ़ी lifted लगेगा. ठीक है, so ठीक है यहाँ तक, and I'm going to take it till here. If possible ऐसे भी आप highlight कर सकते हो. ठीक है, so when the highlighter, when the light hits your face, this part kinds of glows, and ये face काफ़ी lifted लगता है ये part. ठीक है, same we are going to take it हमारे eyebrows के arch, end arch से लेके यहाँ तक. ठीक है, so yes, also we apply highlighter on the brow bone. फिर हमारे नोज़ पे स्पेशली यहाँ पे एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऑन द चिन. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लोग का जो चिन एरिया है थोड़ा सा लंबा होगा, सो यू कैन जस्ट स्किप इट, बिकॉज हम लोग हाइलाइटर इसीलिए लगाते हैं टू मेक इट लुक लिटिल बिट लॉन्गर. ठीक है, तो यहाँ पे एंड ऑन द क्यूपिड बो.
right? Guys, this is how the face looks after applying the highlighter. Okay, so again, can you see the difference? And now the placement. This I have kept as it is for you to understand the placement of the products. First step is to apply the blush. अब जो ब्लश है वो एग्जैक्टली हाइलाइटर और कॉन्टोर उसके बीच, सो इट शुड बी इन बिटवीन हाईलाइट एंड द कॉन्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना, लेट मी टेल यू, अगर आपका फेस ऑलरेडी काफ़ी स्नैच्ड है, थिन है, सो येस यू कैन एक्चुअली अप्लाई ऑन द एप्पल्स ऑफ योर चीक्स, बट एट द सेम टाइम अगर मेरे जैसा है, थोड़ा सा चबी है, सो येस वी वांट आवर फेस टू लुक स्नैच्ड एंड वी वांट इट टू लुक चिजल्ड। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वी वोंट ब्रिंग द ब्लश टू मच इन फ्रंट, हम लोग फिर से यही डायरेक्शन अप्लाई, इसी डायरेक्शन पे अप्लाई करेंगे। इस वी कैन अप्लाई इट हियर, थोड़ा सा अगर आप लोग को चाहिए तो थोड़ा सा ऑन द नोज़, ऑन द चिन एज वेल, एंड देन यू हैव टू blend it in such a way that it gets blended with your contour. जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये साइड थोड़ा सा ड्रूपी है बिकॉज इट्स स्टिल नॉट ब्लेंडेड, सो आफ्टर इट्स ब्लेंडेड इट्स गोइंग टू लुक द सेम। ये साइड काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हुआ है, सो गिव मी जस्ट a second and I'll come back and I'll show you the end results. This is how the face looks after contouring and after applying blush and highlight. So the face, as you can see, looks so chiseled and it looks in shape, and also if you noticed, application of makeup looks so natural. Well guys, I hope I made it clear and I made it little bit easier for you guys to understand what is contouring, the blending techniques and how to apply the blush. And suppose I missed anything, please do let me know in the comment section. Well, I'll see you in my next video. Till then, you guys take good care of yourself. Till then, bye bye.